Hi everyone, this is a presentation on Technocraft Industries, which is a company listed on the Indian stock market on NSE and BSE, right? And ये एक ऐसी company है जिसने recently over the past 1 year has done really well. So we are going to look into this company, what it does, how it does, and whether this would be a good investment or not. This is not investment advice. This is just for educational purpose. And as a quick disclaimer, I do personally hold this company in my portfolio, so there might be some bias. Okay, so let's just get into it. So what is this company all about, right? So Technocraft is a company जो ड्रम क्लोजर्स का काम करती है, स्कैफोल्डिंग का काम करती है, टेक्सटाइल का काम करती है. यही तीन इसके मेन बिजनेसेस हैं. एंड देन इट हैज़ सम इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू डिफेंस थ्रू इट्स सब्सिडरी, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. The main driver for this company has been scaffolding and drum, right? Drum closures. वो क्या होता है? We'll just get to it in the next slides. And for this company, the main driver has been export. So most of its revenue come from exporting the items that they produce and exporting the services which they have in their portfolio. So what is scaffolding first of all? तो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखा होगा कि ये रॉड्स लगी रहती हैं, और आई एम श्योर यू कैन सी द पिक्चर ओवर हेयर कि कंस्ट्रक्शन में ये रॉड्स लगी रहती हैं जिस पे जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर फोर्स होती है, वो इन्हीं रॉड्स के थ्रू अपना सारा काम करती हैं. तो उनको जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करना होता है, सो दे हैव टू क्लाइंब अप, राइट, एंड दे हैव टू क्लाइंब अप विद ऑल देयर इक्विपमेंट्स. तो स्काफोल्डिंग की वजह से ही वो बिल्डिंग के ऊपर नीचे और उसकी चारों तरफ जो है मूव कर पाते हैं. तो ये जो स्कैफोल्डिंग का काम है, दिस इज़ द कोर बिजनेस ऑफ टेक्नोक्राफ्ट, एंड दिस फॉर्म्स, एज आई हैव रिटन हियर, 43% of their revenue. So it's used in construction, used in renovation, maintenance. ठीक है. So this is basically what their main business is, and it can be made of metal pipes, tubes, wooden planks. तो इनके जो मेन स्पेशलिटी है टेक्नोक्राफ्ट की, वो स्काफोल्डिंग की है, जहाँ ये एल्यूमिनियम पाइप्स बनाते हैं जो लाइट भी बहुत होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी बहुत होते हैं, राइट. इंडिया में आपने देखा होगा कि लोग जो है वो मेटल पाइप्स की जगह कहीं जो छोटा लेवल पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बैम्बू जो है बैम्बू रॉड्स भी यूज़ करते हैं, राइट. सो स्कैफोल्डिंग, formwork and tower business form 43% of revenue, right, which is the major chunk, जिसमें से अक्सर exports के through होता है. These products are supplied to industries such as oil and gas, power refineries, petrochemical infrastructure and commercial construction. तो कहीं भी किसी भी किस्म का man-made structure होगा, चाहे वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए हो या रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हो या इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए हो, तो वहाँ स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, right? And you might have seen this with your own eyes in real life. You might have seen this in movies. You might have seen this in television. So this is an essential part of any growing economy. जहाँ infrastructure बन रहा है, वहाँ scaffolding होती ही होती है. So if we are positive that the world is growing, the global economy is growing, तो ह्यूमन मैन मेड स्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे ही और बनेंगे ही. तो स्कैफोल्डिंग का बिजनेस ऑब्वियसली समथिंग विच इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज. इट्स नॉट अ बिजनेस विच विल बिकम ऑब्सोलीट, राइट. सो व्हेन वी इन्वेस्ट इन अ स्टॉक, हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि ये जो बिजनेस कर रहा है, विल दिस इवन बी रेलिवेंट 10 years फ्रॉम नाउ, राइट. तो स्कैफोल्डिंग ऐसा बिजनेस है विच वी आर प्रीटी श्योर कि इट विल बी रेलिवेंट, राइट. सो इसके जो मेन 3 कस्टमर्स हैं स्कैफोल्डिंग के, L&T है, शोभा है और राहेजा डेवलपर्स है. And apart from that, they have many other customers as well, obviously. Now, what are drum closures? Drum closures form 26% of revenue. So, drum closures refers to components or mechanisms used to seal and secure the openings of drums, barrels, or similar containers. तो जो international trade होता है दुनिया में, because we are living in a globalized world, we are living in a capitalistic, globalized industrial world. तो everyone is buying from everywhere and everyone is selling to everyone, राइट. इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल शिपमेंट्स बहुत होते हैं. तो जो भी सामान होता है उसके लिए पैकेजिंग होती है, उसके लिए चाहे वो कार्टन बॉक्सेस में हो, चाहे वो ड्रम्स में हो. तो ड्रम्स का जो क्लोजर्स होते हैं वो ये लोग बनाते हैं. एंड एज वी विल सी, दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव businesses that they are in. So these closures are designed to ensure the contents of the drum remain securely contained and protected during storage, transportation or handling.
So you can see, this is just the image is just for illustration purpose. So company is the second largest manufacturer of high precision and sophisticated drum closure products. Out of the total revenue of drum division, approximately 90% revenue comes from export sales. अब you might not see कि यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि I think मेरा face आ रहा होगा इसमें. So company continues to enjoy a worldwide market share of 36% excluding China. तो अगर हम चाइना का मार्केट शेयर हटा दें तो जो ग्लोबल डोमिनेंस है, that is 36% for Technocraft in the space of drum closures, which is pretty high. Customer for drum closure, तो ये इनके ये जो कंपनीज हैं, बीपॉल, ड्रम पार्ट्स, मैसोर, स्कर्ट्स, ऑगस्ट, बर्लिन, बर्गर, तो ये सारे जो कंपनीज हैं, these are basically the main customers for drum closure business of Technocraft. Then coming to yarn and fabric, which makes up 25% or 1/4 of the business, right? So company produces a variety of products ranging from any 20 to any 40, right? Any 20-40 क्या होता है, we'll come to that. So 56% of yarn products mainly in Europe, Asia and Latin America. Overall this division has been re-engineered and loss-making product and locations have been plugged. तो ये business हालांकि it's good for the consumer, लेकिन कंपनी के लिए business अच्छा नहीं रहा है because this has not been profitable for the company. So we'll see, ये company, the Technocraft is thinking of demerging the yarn division from the main Technocraft and setting it up as a separate company, ताकि जो main business है Technocraft का, जो scaffolding और ड्रम क्लोजर्स का है, उसमें वैल्यू अनलॉक होने लगे. क्योंकि अगर कोई कंपनी है जो अच्छा बिजनेस भी करती है और बुरा बिजनेस भी करती है, तो आमतौर से उसको जो वैल्यूएशंस मिलते हैं वो बुरे बिजनेस के मिलते हैं. तो टू अनलॉक द वैल्यू, जो उसका बुरा बिजनेस है, यू हैव टू सेपरेट दैट बिजनेस आउट, उसकी डीमर्जिंग करनी पड़ती है. तो जो ओरिजिनल कंपनी बचती है जिसमें अच्छा बिजनेस है, उसको फिर अच्छे बिजनेस वाले वैल्यूएशंस मिलते हैं, तब जो है पीई री रेटिंग होती है, तभी मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं. So what is any 20-40 yarn? So this is nothing but the thickness of the yarn, right? तो any is basically the count that represents कि हमें अगर एक पौन किलोमीटर 570 मीटर्स की अगर हम एक वो लें, इसका धागा लें, तो हमें कितने धागे ऐसे लेने पड़ेंगे कि ये तकरीबन आधा किलो का होगा, राइट? सो एनी 20 मीन्स कि हमें जो है 750 मीटर के 20 धागे लेने पड़ेंगे, तब जो है ये 1 पाउंड का होगा, यानी ऑलमोस्ट आधा किलो का होगा. और एनी 40 कहेगा कि हमें 20 धागे नहीं बल्कि 40 धागे लेने पड़ेंगे वही वेट को पहुंचने के लिए. इसका मतलब एनी 40 के धागे बहुत पतले हैं बिकॉज यू नीड मोर ऑफ इट, एंड एनी 20 के धागे जो हैं वो मोटे हैं बिकॉज आप कम धागों से ही उतना वजन हो जा रहा है, राइट? सो इट मीन्स कि ये लोग अलग अलग वेराइटीज़ के जो हैं yarns प्रोड्यूस करते हैं. So thickness of cotton yarn has significant impact on its application properties, right? Thick yarns are used for making heavy duty applications like carpets, denim fabrics and hosiery. Finer yarns such as any 40 are more delicate and lightweight. They are used in production of garments like t-shirt, finer woven fabrics and etc. Then key export presence. So TIL is Technocraft Industries India Limited. So they have exposure to countries like New Zealand, Australia, USA, India यानी लिखना चाहिए because India is domestic market, right? So why are we focusing on this company? So here are 2 points, right? Low capex need. Low capex is capital expenditure, and capital expenditure जब कंपनी का चल रहा होता है या high capex needs होती हैं, तो margins जो हैं वो सफ़र करते हैं, क्योंकि जब कैपेक्स हाई होता है तो डिप्रिसिएशन भी हाई होता है. लेकिन क्योंकि द कैपेक्स इज स्टिल एसेट विच इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज़ स्टिल कैपिटल विच इज़ वर्क इन प्रोग्रेस, तो वो कैपिटल का वो हिस्सा जो अभी इन्वेस्ट किया जा रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, वो हिस्सा अभी रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर रहा, वो हिस्सा अभी बिजनेस प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, वो बाद में प्रोड्यूस करेगा. लेकिन जब कैपेक्स का फेस चल रहा होता है तो मार्जिन्स सप्रेस्ड रहते हैं, क्योंकि ख़र्चा तो हो रहा है, डेप्रिसिएशन भी हो रहा है, लेकिन उसके रिटर्न्स अभी नहीं मिल रहे. लेकिन टेक्नोक्राफ्ट की ख़ास बात यह है कि टेक्नोक्राफ्ट में कैपेक्स की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ड्रम क्लोजर बिजनेस हैं दे आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल एज वील सी इन द नंबर्स इज़ वेल. और जो उनकी थोड़ी बहुत कैपेक्स लगेगी स्कैफोल्डिंग बिजनेस में, वो भी जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है उनकी एक स्कीम है वेयर दे विल रीइम्बर्स ऑल द मनी, द गवर्नमेंट विल रिटर्न द मनी टू टेक्नोक्राफ्ट, जो भी वो स्कैफोल्डिंग में लगाएंगे ओवर द नेक्स्ट 10 years, राइट? दिस इज जस्ट अ स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट टू बेसिकली प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट?
And the other point is huge opportunity size. So Technocraft is a strong play on global real estate and industrials. So the global market currently for scaffolding is valued at $52 billion, and it will reach $81 billion by 2031 at an annualized growth rate of 4.6%. That is the projection. So this is the revenue segmentation. Okay, this is the revenue segmentation. So you can see here कि 2012 में, आज से 10 साल पहले, the main revenue, the biggest chunk of revenue was actually drum closures, which was 30%, and scaffolding was only 21%, whereas the yarn was also 30%, almost 30%, right? तो yarn और drum ही इनका main business था पहले, 10 साल पहले. Now fast forward to today, 2023, so you can see the biggest revenue is actually coming from scaffolding, which is 43%, and ड्रम क्लोजर्स 26%. तो ऑलमोस्ट उतना ही रहा है, थोड़ा सा कम हो गया है. लेकिन जो यार्न का बिजनेस है वो एकदम आधा हो गया है, राइट? 16% हो गया है. एंड देन फैब्रिक एंड ऑल दैट, इंजीनियरिंग डिज़ाइन आर वेरी स्मॉल पोर्शंस, बट द मेन फोकस हेयर इज स्कैफोल्डिंग, क्योंकि कंपनी का अभी पूरा फोकस ही उसी पर है, राइट? तो स्कैफोल्डिंग रेवेन्यू हैज़ डबल्ड नाउ, राइट? इट हैज़ एक्चुअली मोर देन डबल्ड. मैं यहाँ कहना क्या चाह रहा था कि पहले इट वॉज 21% and now it is 43%. So in terms of the percentage, revenue percentage कितना था उस सेगमेंट से, वो डबल हो गया, 21% से 43% हो गया. In terms of absolute numbers, वो 120 करोड़ से almost 900 करोड़ हो गया है, right? 890 करोड़ हो गया है. So it's almost, you could say, 7 times. So it has, in 10 years, scaffolding revenue has become almost 6 to 7 times, which is huge. And then EBITDA, you can say, so scaffolding, again, it shouldn't be revenue, it should be EBIT. Let me actually edit this right now in front of you guys. Right, so it's actually, it has done almost 6x, right? Almost 6x over the last 10 years. And then EBIT has increased from 21 to 59%. EBIT contribution has increased, right? So you can see कि scaffolding का जो main जो earnings, EBIT is earnings before interest and taxes. So scaffolding के लिए that comes out to be almost 60%. तो आप ये देखिए कि इसका revenue percentage जो आ रहा है वो सिर्फ 43% आ रहा है, वो भी अच्छा खासा है, बट रेवेन्यू 43% है, बट द अर्निंग कॉन्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली ऑलमोस्ट 60%. इसका मतलब स्कैफोल्डिंग इज़ अ वेरी गुड मार्जिन, वेरी हाई मार्जिन बिजनेस, राइट? एक चीज़ और देखिए आप कि रेवेन्यू ड्रम जो बिज़नेस है, जो ड्रम्स का बिज़नेस है, उसमें रेवेन्यू 26% है, लेकिन अर्निंग्स 42% है. रेवेन्यू इतना कम है लेकिन अर्निंग्स इतनी ज़्यादा है. इसका मतलब ड्रम्स के मार्जिन्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, तभी तो इतनी अच्छी अर्निंग्स आ रही है डिस्पाइट द फैक्ट कि रेवेन्यू बहुत कम है. ओके, अनदर थिंग यू नीड टू लुक एट इज़ लुक एट यार्न. यार्न का जो रेवेन्यू है वो 16% है टोटल रेवेन्यू का, 16%, लेकिन आप उसकी अर्निंग्स देखिए तो यार्न इज़ एक्चुअली गिविंग -5%. तो लॉस दे रहा है, प्रॉफिट तो दे ही नहीं रहा, राइट? सो दैट इज़ वाई दे वॉन्ट टू रिमूव द यार्न बिजनेस फ्रॉम द मेन बिजनेस, राइट? उसको डीमर्जर करना चाह रहे हैं. फैब्रिक ऑल्सो, राइट? सो फैब्रिक इज गिविंग 9% ऑफ रेवेन्यू, बट EBIT इज ओनली -3%. सो दिस इज ऑल्सो इन लॉस. सो दैट इज वाई दे वांट टू बेसिकली डीमर्ज द यार्न एंड फैब्रिक बिजनेस. दिस इज अनदर टेबल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड. तो आप ये देखिए कि मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज एम्प्लॉयड इन स्कैफोल्डिंग. सो 58% या almost 60% of all capital is employed in the scaffolding business and 15% is employed in drum business. एंड देखिए अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपको देखना कि यार्न जो बिज़नेस है, जो एक्चुअली लॉस मेकिंग बिजनेस है, उसमें 17%, 17% ये लोग कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं. यानी कंपनी की जो रिसोर्सेज हैं जिससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, उसका 17% वो यार्न को दे रहे हैं. हालांकि यार्न तो लॉस प्रोड्यूसिंग बिजनेस है और ड्रम क्लोजर्स इतना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेटिंग बिजनेस है, और उसमें जो उसके लिए जो कैपिटल एम्प्लॉय हो रहा है वो यार्न से भी कम है. इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग कि मतलब यार्न को तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो बिज़नेस और ख़राब कर रहा है कंपनी का, लेकिन उसको 17% कैपिटल मिल रहा है कंपनी का. और ड्रम्स जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं,
उनको जो है वो yarn से भी कम वो मिल रहा है कैपिटल. So that is why they want to get rid of the yarn business and the fabric business, right? सो सेगमेंटल ROC, इसीलिए आप देख लीजिए ROC इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. जो हमने कैपिटल लगाया उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है. तो आप ये देखिए कि ड्रम बिजनेस का 62% है, 62%, कि इन्होंने सिर्फ 15% कैपिटल लगाया है, लेकिन इनको जो रिटर्न मिल रहा है वो 42% मिल रहा है, राइट. तो दैट इज़ वाई हाइएस्ट ROC ड्रम का है. उसके बाद स्कैफोल्डिंग का 23% है ROC, विच इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी, राइट. Anything I would say, any ROC above 15 to 20% is decent, right? Whereas yarn और fabric का return on capital employed जो है negative है. तो असल बात है scaffolding business की. So it's a very high growth business, right? The major driver is the scaffolding and formworks, जो बेसिकली वही जो पाइप्स और स्ट्रक्चर्स लगते हैं कंस्ट्रक्शन के वक्त. कंपनी हैज़ लॉट ऑफ SKUs इन द सेगमेंट. SKUs बेसिकली उनके अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग रेडीमेड डिज़ाइंस फॉर स्कैफोल्डिंग बिजनेसेस, राइट. SKU जो है वो दूसरी कंपनी और दूसरी इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है. हम अभी इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं. सो टेक्नोक्राफ्ट हैज़ द राइट प्रोडक्ट कंपीटिंग विद ग्लोबल कंपनीज, एंड दे आर मेनली इन एल्यूमिनियम स्कैफोल्डिंग बिजनेस. और ये एल्यूमिनियम ये खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, right? So they are backward integrated from that perspective as well. Market research basically expects that this will grow globally at the pace of 6.3%, which is good. You know, global obviously कोई भी इंडस्ट्री जो ग्लोबल ग्रो करती है वो आपको 3 से 6 या 3 से 7% के बीच में ग्लोबल ग्रोथ मिलती है, बिकॉज ऑब्वियसली ग्लोबल इकॉनमी उससे ज़्यादा तेज़ नहीं ग्रो कर सकती. Scaffolding business requires deep engineering skills and provide the right type of products to consumer, and they have been doing this since a very very long time, right? So they have that expertise built in to basically carry out this work. Scaffolding business can only be done across the globe with a lot of precision and approval from authorities across the globe. So there is actually a lot of entry barrier to this business as well, which it seems that Technocraft has already taken care of well, right? In scaffolding business, the company has ventured into aluminum extrusion business, which will further opportunities of growth for the company. The recently announced capex would take at least 15 to 18 months and come on stream. It would deliver at least 700 crores of revenue for the company. तो आप ये देखिए कि सिर्फ जो scaffolding का business है, that will deliver 700 crores of revenue. And अभी आप देखिए कि अभी कितना revenue उससे आ रहा है. Let's just have a look, right? तो अभी स्कैफोल्डिंग का रेवेन्यू है 889 करोर्स. इसमें 700 करोर्स और ऐड हो जाएंगे. थिंक ऑफ दैट. तो ये ऑलमोस्ट 900 है, राइट. इसको लेस राउंड ऑफ करके 900 ले लेते हैं. तो 900 करोड़ का रेवेन्यू स्कैफोल्डिंग से अभी आ रहा है, और अभी से 1.5 साल बाद जो उनका स्कैफोल्डिंग में कैपेक्स पूरा होगा तो इसमें 700 करोड़ का रेवेन्यू और आ जाएगा. सो 900 प्लस 700 इज 1600 करोर्स. तो ये जो 880 करोर्स है, ये 1600 करोर्स हो जाएगा आज से तकरीबन 18 मंथ्स या 2 साल बाद, राइट. सो दिस इज़ अ प्रीटी गुड पॉइंट टू नोट ओवर हेयर, right. The company is incurring a capex of 367 crores. They have received incentive from government of Maharashtra where they can claim refund 100% incurred by them over the next 10 years. तो ये जो कैपेक्स कर भी रहे हैं वो उनको धीरे धीरे वापस मिल जाएगा. तो कैपेक्स करते हैं तो जो सबसे बड़ा इनकम स्टेटमेंट में हिट लगता है वो डिप्रिसिएशन का लगता है, राइट. तो डिप्रिसिएशन भी इनको होगा ही नहीं एक तरीके से, क्योंकि वो धीरे धीरे करके, क्योंकि डिप्रिसिएशन का जो पीरियड होता है वो भी तकरीबन 10 to 20 ईयर्स होता है बेस्ड ऑन हाउ द कंपनी वांट्स टू डू इट्स अकाउंटिंग, राइट. तो वो उनको जितना वो डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं उतना ही उनको रिफंड भी मिल रहा है. तो बेसिकली दे आर डूइंग, देयर इज द नेट इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर कैपेक्स इज 0, राइट. देन ड्रम क्लोजर. तो इट्स अ कैश काउ, राइट. इसमें बस पैसा आ रहा है, इसमें उनको और कैपेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में उतनी क्रेजी इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो नहीं सकती. बट दिस इज़ ऑलरेडी वेरी लुक्रेटिव, क्योंकि इससे अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा लागत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही. तो इट्स अ सेल्फ सफिशिएंट बिजनेस जो सबसे ज़्यादा हाई ROC दे रहा है, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल दे रहा है. सो इट्स अ गुड बिजनेस, राइट. इससे जो पैसा बन रहा है दे कैन देन पुट दिस मनी इन स्कैफोल्डिंग बिजनेस, राइट. Textile business is actually their worst business. I'm going to cut this video short because I feel already काफ़ी लंबा हो गया है.
सो बट वी हैव ऑलरेडी सीन द नंबर्स कि टेक्सटाइल जो बिजनेस है यार्न्स का और फाइबर्स का, वो एक लॉस मेकिंग बिजनेस है विथ नेगेटिव ROC, राइट. So you can go through the presentation. So this is a business that they want to demerge from the company, and they are not going to allocate any more capital into this company. हम देख रहे हैं कि अभी तक इन्होंने जो capital इसमें डाला है, that is even higher than drum closures, which is a very poor capital allocation decision by the management. But I think now they are realizing that it was a poor decision, and they are no longer going to focus on the textile business. So that's a good thing, right? The worst risk has passed, so more and more individuals begin to look at it. और उसके बाद यहाँ द पॉइंट्स दैट हैव बीन मेड इज़ जो लॉस मेकिंग चल रही थी यार्न में, हो सकता है कि वो लॉस भी प्रॉफिटेबल हो जाए, वो लॉस भी टर्न अराउंड हो जाए. तो दैट्स ऑल्सो अनदर गुड पॉइंट, राइट. The first silver lining is looking at home textile. Their capacity utilization has improved. They are reaching 90-95% utilization. So it basically says, you know, कि वहाँ जो yarn और fabric की जो industry, that's also getting better. But they're more interested in, you know, leaning out this business, making this a separate affair. So Technocraft Industries is a family-owned business, right? The company are run by two brothers and their son. So Darshan Kumar Saraf, Sharat Saraf, and their sons Ashish Saraf and Naveed Kumar Saraf, right? Another thing that I want to sort of clarify here कि जो मैं demerger की बात कर रहा हूँ, मुझे I'm not completely sure. There is no official statement from the company yet कि demerger होगा. Okay, I think bit of this is speculation कि पता नहीं demerger होगा कि नहीं होगा, but people who are studying closely this business and are maybe also interacting with the management, they feel this is not official, but they feel कि demerger हो सकता है, और अगर हो जाएगा तो you know it'll be good for the business as a whole. So I just wanted to put that in, right. This is currently the shareholding pattern. So most of the company is owned by the promoters, and इसकी खास बात ये है कि जब से इस कंपनी का IPO हुआ है, promoters have not sold any of their shares at all. मतलब उन्होंने अपनी shareholding dilute नहीं की, बल्कि promoters have bought back shares, which shows कि promoters believe in the future of the company, right? Which shows that promoters have skin in the game, right? So this is also a bullish sign that is something that, you know, we can look at. So thanks for watching. This was my brief presentation on Technocraft Industries. Again, do your own research before investing in the stock, and you don't have to invest in the stock. It is a fundamentally good stock, and fundamentals are what decides the long-term movement of a stock price. In terms of short-term movement, that is, you know, something that is determined by the technical indicators and price volume action, and this was not a technical study. One of my friends who's really good at technicals, he says, उसका कहना ये है कि technically this company seems to be near its macro resistance zone, तो हो सकता है यहाँ से जो है एक pull back हो. So a technical trader will not buy this company at this levels, but a fundamental investor might buy it for long-term purpose. So those are, you know, different opinions of a technical person and a fundamental person. So you can do your own research, and I hope that I have added some value in your investing journey, and I'll see you in the next video.